Hi everyone, welcome back. Hope you have all started experimenting with costume designing. Well, in the last lecture, we spoke about the relationship between costumes and makeup. In today's lecture, we will talk about the relationship between costumes and lights. But even before we begin, let us watch this video. लेकिन आप तो वहां जा रहे हैं वो भी इस वक्त और नमाज कब और कहां पढ़ूं उसके लिए किसी फिरंगी की इजाजत दरकार नहीं और ना ही अपने मजहब का नसीहत। अब तुम्हारे दीदार का इंतजार हमें करना होगा। और रोशनी फिर आ गया हूं तुम्हारे सुकून में खलल डालने। सही नसीब जो आप इस तरफ नजर घुमाते हैं। एक बेचैन रूह और करे भी तो क्या, खुद से परेशान हो जाता हूं। जब मौसम गर्मा और ये सख्त लबादा उतरता भी नहीं कम वक्त। शुक्रिया, अब जाकर इस बदन को हवा लगी, वरना बंद ही बंद कोफ्त हो जाती है। इन जूतों के बिना पांव महसूस ही नहीं होते, हड्डी की तरह सिल गए हैं साहब। हंस रही हो? हंसो। क्या? आओ। सांस महसूस करो। कुछ पता चला? इसकी बू कैसी है? नहीं तो पसीना है थोड़ा बहुत। पसीना उनके लिए बहाया और सूख गया, अपनी बू छोड़ गया। तो बाद में थोड़ा इत्र लगा दूंगी, खास कन्नौज से मंगवाया है। ये तो नस नस में फैल गई है जहर की तरह, इसे रास्ता नहीं मिल रहा। सांस में खुदती जा रही है और सांस इस हवा में। दूर हो मुझसे। आहिस्ता सवार, आहिस्ता से कहो जो कहना है। बाकी सिपाहियों से कहो ये, जिनकी चीख हो पुकार ना हो पुकार, खुदा से रहम की इंतजार कर रही है। क्या कुछ गलत हो गया है तुमसे या किसी साथी से? गलत? सिपाही के लिए सही और गलत है ही नहीं, बस अहकाम और अहकाम को बचा लाना। मैंने भी वही किया। उन्होंने मेरे हाथ में बंदूक दी, कारतूस दिया। That was lovely. So now, since we are going to be talking about the relationship between costumes and lights, I want you to pay attention to the effect of lights on the costumes and the play in general when you watch these videos. Hope you noticed all this in this video also. Okay, let us continue. One of the main things in any performing art is visibility. The most important thing in watching any play is visibility. Imagine a play for which you have designed fantastic costumes, the sets are great, and the actors are doing a fantastic job. But the lights are so dim that there is difficulty in seeing anything. Similarly, imagine the same situation and the lights are extremely bright and every scene looks the same. In either case, you will find it very difficult to watch a play if visibility is a problem. More than this, imagine as a costume designer how your costumes would appear in the wrong lights. Neither would they have any effect
nor would the space and the mood of the play be seen. The right kind of lighting would show your costumes correctly and give the right feel of the time and space. It would also convey the mood properly. Let us watch this video. बहुचर माता के सामने मैं कसम खाती। बहुचर माता के सामने मैं कसम खाती। आज से मैं औरत हूँ। आज से मैं औरत हूँ। मैं सच्ची सच्ची रहूँ। मैं सच्ची सच्ची रहूँ। मैं चोरी नहीं करूँ। मैं चोरी नहीं करूँ। किसी औरत का भड़वा नहीं बनूँ। किसी औरत का भड़वा नहीं बनूँ। झूठ पढ़ने पर मुझे हर सजा मंजूर। झूठ पढ़ने पर मुझे हर सजा मंजूर। So, here you see that the lights give a festive mood as it is a celebration. Also notice how the lights bring out each color and enhance it. Later, the light changes into a slightly more serious tone without losing its light mood, as the characters settle down to a ritualistic oath-taking. Now think of this scene in plain lights. Not interesting, right? So then, let's go on to talk about special effects. In this, I am not just talking about lights. I would like to say that as a costume designer, one can always discuss with the light designer if you need a particular kind of lighting for any scene to enhance your costumes, as well as the effect of a particular scene for which the costumes have been specially designed. Now let us watch this video. तुमन के नाचना पसंद ना?
मुझे भी नहीं है। मके शर्म लागू। शर्म तो मके भी लागू, पर क्या करूं ये मुआ। कप्पू दाजू लोगे एकदम ताजी माल छुहा। ना मिनिलिन। क्यों डर गए? छाछला कुशे कप्पू दाजू बाकी बात याद आ रही क्या? देखा मके मिजाज पसंद है, मैंने डाला किसी से भी। हाँ तो लगे लियो, पी के चला देख लूं तुम्हारी मर्दानगी। मके जोश में चलाओ। पीनी हो तो पियो, न तो डर के कोने में दुब के रहो। हमें कहा शाले को नहीं देंगे पीना। ये ले ला तो शाले को दिखा जरा। दिखा शाले को। ये ले गप्पू खींच, तू बोतल खींच आराम से। आराम से गप्पू आराम से। अबे गणेश अब आएगा मजा। गप्पू दाजू जरा नाच के दिखा। अरे नहीं नशो चले नहीं चलेगा निशा। मैं नहीं नाच के दिखा। मिनी डरो किसी से भी हो। मैंने है ना एक बार हवा में 12 सिंगे पे सवारी की थी, और तुम कहो ना तुम्हें शैतान को भी जगा दी। अच्छा ओ गप्पू मियां रीजा है ना बहुत जादू टोना करने वाली ठहरी। तू कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मैं कर सकूं। मैंने है ना एक बार So you see here that this is a troll kingdom scene from the play Peer Gynt. This was designed with no specific country or place or mythology as a reference point. The whole idea was to give the scene a mystic and supernatural quality. The costumes were designed in an abstract form just to give the impression of strange creatures that appear out of nowhere or are probably a creation of the mind of the character. Now, how to make them appear out of nowhere? For this, I discussed with the light designer and requested him to give UV lights for this scene. The result was that when the scene begins, you could only see eyes and some colors glittering. And then, when the proper lights come on, you suddenly see all the creatures on stage. The point is that you as a costume designer have to be sure what a particular costume means to you for a scene or character and what kind of light you want it to be seen in. Of course, the light designer may have different ideas or better ones. So, it helps to discuss what you are visualizing with the light designer. Let's watch another video. मेहरबान कदरदान साहिबान, इस सोने की संदूकची को देखें जिसमें एक और संदूकची है, फिर और एक, फिर और एक, फिर और एक और, हाँ इस तरह और फिर उसके भीतर वो जो आसमान में है, 7 आसमानों तक फैला है, 7 समंदरों पर छाया है, जिसमें धरती घूमती है, सूरज घूमता है, चांद घूमता है, गैबी गोले
चक्कर काटते हैं वो क्या है? मेहरबान कदरदान साहिबान, सवाल करता हूँ पेट के खातिर। वाह, क्या सवाल है मेरे आका। जुपिटर, वीनस, तारे, ग्रह किस में और कैसे अपनी धुरी पर घूमते हैं? पर आका, पेट का सवाल से क्या ताल्लुक? नहीं समझा? समझ जाएगा, अभी उम्र से बच्चा है, अक्ल का कच्चा है, लेकिन बात सच्चा है। बहुत ऊपर की चीज इस पिटारी में पकड़ी है, पेट के खातिर मुसीबत मोल ली है। आका, हाँ। पेट में भी क्या वही चीज है? चुप चुप चुप, अगर जान गया है तो भी अनजान रहे, समझ कर भी नादान रहे। वक्त पे खुलेगा हर राज, वक्त का ध्यान रहे। आप लोग क्या साइंसदान हैं? मुझे बताया गया था कि यहाँ बहुत से साइंसदान जमा हैं और इस तमाम कायनात के राज खोल देंगे। मोहतरिमा, हम तो जादूगर हैं, हमारे पास तो सिर्फ एक पिटारा है। नहीं, फिर और एक एक एक, एक। आका, ओके, नाउ गो। That was lovely. Well, as a designer, you also need to know about lights and pigments. The relationship between lights and costumes is quite complicated, yet very interesting and challenging. You should know that the primary colors for costumes are red, blue, and yellow, whereas for lights they are red, blue, and green. This one color difference changes everything and can create a major confusion in the visual. For example, blue pigment will appear gray in red light and light blue in green light. In blue light, it will appear deep blue. A red pigment will appear intense red in red light, a purple black in blue light, and maroon in green light. You will find all the details in the Theodore Fuchs table of color effects. So, when you design and decide upon the colors, keep in mind how the color will appear in certain lights and whether you want them to appear in that color or not. You can always change the shade or tint of a particular color to solve this problem. But for all this, you first need to know what lights the light designer is going to be using. Therefore, you should have a meeting and discuss your designs with each other and then decide on the colors and textures. Another point I would like to mention from a light designer's point of view is that a costume designer must be aware of the angle of light. For example, if two actors are standing together, it is not necessary that the light will only come from the front. If the light is coming from a different angle, then it may happen that the light is directly falling on one actor and the co-actor is getting just the bounce of the light. Therefore, if a costume designer watches the angle of light, he or she can also decide the color and the texture of the costumes. The same thing also applies for a light designer. Before doing the final design, both the costume designer and the light designer need to sit together
and discuss about the design in detail so that the final visual can communicate the required emphasis for a particular moment or a situation. Let us watch this clipping. रीना सर के नामकरण की बधाई हो। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। नतालिया का नाम आ गई। हाँ, कैसी हो प्यारी नतालिया? अच्छी हूँ अम्मा। ये मेरी कॉफी चल रही, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं, सब घर के ही लोग हैं नतालिया। नतालिया तुम्हें हरी बेल्ट नहीं बांधनी चाहिए थी, अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? कोई अपशगुन होता है क्या? तुम्हारी ड्रेस के साथ नहीं जच रही। सर की? लेकिन ये हरी ना, ये तो दूसरे रंग की है। आओ। दोस्तों एक बार फिर से अपने क्लास उठाइए प्लीज। ये लीजिए, ये जाम इरीना के नाम। इरीना तुम 100 सालों आप इसको भी खाए पे हो, तारीख की तारीख कर रहे हो। भाई मेरी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि इरीना की शादी इसी साल हो जाए, क्योंकि वो समय आ गया है जब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। एक मिनट, नतालिया वालों का हम आपकी भी सगाई की खबर जल्दी सुनने की उम्मीद है, कुछ कीजिए। क्यों नहीं साहब, नतालिया का एक चाहने वाला तो यहाँ भी मौजूद है। इस हरकत के लिए मेरी बीवी के 20 नंबर कटने चाहिए। ये शराब बहुत अच्छी है, किस चीज से बनी है? चट्टे की। आज रात के खाने में पेट की पाई और भुना हुआ बटेर मिलेगा। आप लोग रात को खाने बनाएंगे? मैं आ सकता हूँ? हाँ, आप जरूर आइए। इनके यहाँ तकल्लुफ की कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि दिल बना है सिर्फ प्यार करने के लिए। एक बात तो 10 बार कहते हुए आप खाते रहिए। अरे यहाँ तो खाना भी शुरू हो गया। हाँ शुरू हो गया, चलो। नाम लेने की बहुत बहुत बधाई। भगवान तो सब कुछ है, सब कुछ। सर प्लीज, अगर आप लोग करीब आएंगे तो एक फोटो कर लेना। यस। मैं आपके लिए एक चीज और लाया हूं। सर प्लीज आप भी आइए। आइए सब आइए। देखिए आइए, देखिए। बहुत बढ़िया। आज सुबह ना हाई स्कूल के बच्चे को दौड़ पर ले गया था। अरे वाह, हमने जिम्नास्टिक भी सिखा दी। सागर के उस ढालू तट पर शाहबलूत का पेड़ खड़ा, उस पर एक सोने की जंजीर। मैं क्यों दोहरा रही हूँ ये सुबह से? अबे दोस्तों, मेज पर 13 लोग हैं। मैंने कहा कि मेज पर 13 लोग हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई है जो किसी के प्यार में गिरफ्तार है। कहीं वो आप तो नहीं एवान रोमानोविच? मेरा क्या, मैं तो पुराना पापी हूँ भाई। लेकिन ये नतालिया वालों का क्यों बोलने जाता है? एक मिनट, रुको तो, मेरी बात सुनो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। So, did you notice the play of lights and how it affects the costumes and the mood of the scene as they together in conjunction create the right feel and mood of a particular scene? Well, I think you have been given a lot of food for thought. In this lecture, we talked about the relationship between costumes and light and how one affects the other, and also how together they create the required intensity, mood, and graph of any given play. We also talked about how a designer should be aware of the light angles and how it affects the look and feel of the costumes. Now, you should be able to go ahead and discover many more things by yourself. So, I wish you all the best of luck for your creative journey. Bye-bye.